Okay, good afternoon, everyone. Now we shall be proceeding with the lecture. A Laplace transform of or a derivative of Laplace transform. Yes, yesterday we saw that Laplace transform of or division by t, effect of division by t, now here we have to learn Laplace transform of derivative. Same concept we have to apply here. Same concept like effect of division by t, multiplication by t raised to n, etc. First shifting theorem. All things we have to apply here, and then we have to tackle the Laplace transform of derivative. So proceeding, Laplace of transform so the formula of Laplace transform of derivative is Laplace of f dash of t, which is equal to minus f of 0 प्लस s इंटू लाप्लास ऑफ f of t. बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे. So this is basically formula के लाप्लास फाइंड आउट करना है. Now the first problem I'm just taking here. Given f of t is equal to t plus 1, 0 is less than or equal to t, t is less than or equal to 2, and f of t is equal to 3, t is greater than 2, find Laplace f of t, f dash of t, and Laplace of f double dash of t. तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हमें करना है Laplace ट्रांसफॉर्म में. So this kind of a question is basically this kind of a question is belongs to that or solved by the definition of a Laplace transform.
तो देखो यहाँ पे फंक्शन दिया गया है आपके लिए एफ लाप्लास एफ डबल डैश टी का फॉर्मूला मैं लिख दूं पहले। लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी जिस तरह है उसी तरह लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी, और वी कैन से दैट इट इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी क्या होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन दिस पार्ट, इमेजिन कर सकते हैं हम लोग इस पार्ट को। दिस विल बिकम्स व्हाट, अगर हम डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ऑर्डर है तो माइनस एफ ऑफ जीरो है इंटू एस ऑफ एल लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है। सो व्हेन इट विल बिकम्स एफ डबल डैश ऑफ टी, so the formula you should remember, it will becomes s square Laplace of f of t, s square into Laplace of f of t minus s into f of 0, f of 0 minus f dash of 0। तो ये मैक्सिमम 2 टाइम्स तक पूछ सकते हैं। Now see the solution of this problem। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व अगर करना है हमको तो यू वी हैव टू यूज दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। Like definition of Laplace transform, if you remember Laplace transform का definition, Laplace of f of t is equal to integral 0 to infinity e raised to minus st f of t into dt, which is equal to f of s। So देखो डेफिनेशन है, फंक्शन है आपके पास, फंक्शन दो है यहाँ पे, आप अगर अच्छी तरह से देखोगे एफ ऑफ टी एक टी प्लस वन दिया गया है, एक एफ ऑफ टी थ्री दिया गया है। तो इसी में हम लोग वैल्यू रखते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का। सो लाप्लास एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या है फॉर्मूला, दैट इज 0 टू इंफिनिटी e raised to minus st kept as it is। सो e raised to minus st as it is, f of t आपके पास क्या है, पहला फंक्शन t प्लस वन, देन ये तो फर्स्ट फंक्शन के साथ हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेस कर दूं सबसे पहले, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूजन होगा। इंटीग्रल टू will start from 0 to 2, you just remember, see this is a limit point। so integral 0 to 2, वहां पे f of t क्या है, that is a t plus 1 and e raised to minus st into dt, plus the limit point will be become what, from 2 to infinity। so 2 to not defined और infinity, उसमें फंक्शन क्या है आपके पास, थ्री है, तो एफ ऑफ टी के जगह पे आप क्या रखोगे, थ्री इंटू ई रेस टू माइनस एस टी इंटू डी टी। सो दिस इज वी जस्ट पुट इट द फंक्शन in the definition of Laplace transform। so Laplace of f of t which is equal to, or instead of this part we have to apply the integration by parts here।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई करो. इफ यू अवेयर अबाउट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u into v into dx, u as it is, take the integration of v, so I will write as a v1, then take minus sign and take the derivative of this u, so I have to write u dash. फिर इस v1 का नेक्स्ट इंटीग्रेशन निकालोगे, you will get v2 प्लस u dash का नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे u डबल डैश, एंड v2 का नेक्स्ट डेरिवेटिव विल बिकम्स v3 माइनस सो ऑन. ऐसा कंटिन्यूअसली चलते चले जाएगा प्रोसेस. कब तक? जब तक u जीरो नहीं हो जाता. अब यहाँ पे जो रूल आप लोग पढ़ते हो, LIATE, logarithmic, inverse, algebraic, trigonometric and exponential. So according to that, you have to choose which function is your u and which function will be v. So here in this terms, algebraic function is this and this is an exponential function. So according to the this word, this is u and this will becomes v. ये तो कांस्टेंट है 3, तो 3 का मतलब नहीं है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल आपको फाइंड आउट करना है. सो आई हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. लाप्लास ऑफ f of t which is equal to t plus 1 को u ले लिया तो u को एज इट इज रखूंगा t plus 1, और इंटीग्रेशन ऑफ इस पार्ट का, इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन e raised to minus st and divided by minus s, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं. फिर देखो यहाँ पे u एज इट इज रखा, v का पहला इंटीग्रेशन निकाला इसका, तो ये पार्ट मिला. फिर माइनस साइन एज इट इज, इस पूरे पार्ट का मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो 1 का डेरिवेटिव मेरा क्या हो जाएगा 0 एंड t विल बिकम्स 1, so we have to write 1 as it is and we have to take the integration of this whole part. So e raised to minus st का इंटीग्रेशन क्या था, e raised to minus st by minus s, तो फिर से वही टर्म है, खाली फिर से डिनोमिनेटर में आएगा, तो माइनस s इंटू माइनस s, it will becomes s square e raised to minus st by s square. तो ये फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया. फर्दर आप नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अब u आपका क्या होगा 1. ये फॉर्मूला अच्छी तरह से माइंड में सेट करो, फिक्स करो पार्ट्स, क्योंकि आगे आपको एक चैप्टर है, मॉड्यूल है फूरियर सीरीज, उसमें सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही चलने वाले हैं और डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला ही आपको अप्लाई होने वाला है. तो अगर ये पार्ट आपका नहीं क्लियर रहेगा, उसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे. ये चीज ध्यान में रखो अच्छी तरह से. तो u as it is, integration of v is v1 minus derivative of this u part as treated as a u dash and this is v2. v2 कैसे आया, जो v1 का नेक्स्ट इंटीग्रेशन लोगे तो v2 रिप्रेजेंट किया है. नेक्स्ट u डबल डैश, जो u डैश था उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव आप निकालोगे तो दैट वी हैव टू राइट एज अ u डबल डैश. फिर जो v2 था उसको नेक्स्ट इंटीग्रेशन करोगे v3 आएगा. तो सेम प्रोसेस वी अप्लाइड हियर. फर्स्ट u treated as it is, u को as it is रखा, v का फर्स्ट इंटीग्रेशन लिया, so we written as it is e raised to minus st by minus s, माइनस साइन लिया, इस पूरे u वाले पार्ट का डेरिवेटिव लिया, तो we are getting 1. then we have taken the integration of e raised to minus st again, तो e raised to minus st का e raised to minus st upon minus s आएगा. Already the in denominator minus s is there, so minus s into minus s will becomes s square. So this part is clear and limit point of this part is 0 to 2. So we have to write 0 to 2 as it is. Next plus 3 as it is, e raised to minus st का integration e raised to minus st upon minus s. Limit point as it is 2 to infinity. Now we have to simplify this part. So Laplace of f of t, which is equal to, substituting the upper limit point, substituting the upper limit here, will getting what, 2 plus 1, so that is 3. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे e raised to minus t, तो e raised to minus 2s हो जाएगा upon minus s as it is. Then minus sign यहाँ पे रखोगे तो e raised to minus 2s, सॉरी, अपॉन एस स्क्वायर, टी के जगह पे रख रहे हैं. ये अपर लिमिट हो गया फर्स्ट पार्ट का. लोअर लिमिट का माइनस साइन लो, 0 रख दो. 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 दैट इज 1. ई रेस टू यहाँ पे 0 पे पूरा जरा, ई रेस टू 0 आपका होता है 1, तो ये आपका हो जाएगा -1 बाय एस.
Why minus? Because of this part. Then minus sign. 0 रखोगे यहाँ पे to 0 will becomes 1, so it will becomes 1 by s square. ये आपका अपर लिमिट हो गया एंड लोअर लिमिट दोनों फर्स्ट पार्ट का, प्लस 3 बाय माइनस एस यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ इन्फिनिटी, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, because while putting t here as an infinity, so infinity into anything will becomes infinity, and e raised to minus infinity is treated as a zero. तो ये पार्ट तो जीरो होने वाला है. लोअर लिमिट माइनस साइन, सब्स्टिट्यूट 2 here, so you will getting e raised to minus 2s as it is. So this is upper limit minus lower limit we put it here. So Laplace of f of t, which is equal to 3 into e raised to minus 2s or minus 3 upon e raised to minus 2s upon s minus e raised to minus 2s upon s square, minus minus this part will becomes plus 1 by s. This is again plus 1 by s square. Now we have to simplify. This part is treated as a 0. Always remember that e raised to minus infinity is equal to 0. Is equal to 0. So this part is 0 and minus minus it will becomes plus. So plus 3 into e raised to minus 2s upon s square. So now you can see that, sorry, you can see this part 3 into e raised to minus 2s upon s square upon s, sorry, s square मैंने लिख दिया गलती से. So this will becomes only s and this part cancel with part because the same term with opposite sign. So Laplace of f of t, which is equal to, so the remaining will becomes what, 1 by s को now 1 by s. देखो इसमें भी s square है, इसमें भी s square है, तो we can sort it this two part or taken as a 1 by s square as a common factor into बचेगा क्या, एक 1 बचेगा और इधर माइनस e raised to minus 2s बच जाता है. And this is our sum completed for Laplace transform of f of t. हमने f of t find out कर लिया because main work is here, that is we have to calculate f of t only. सिर्फ f of t ही calculate करना मेन वर्क है, रेस्ट वर्क नहीं है कुछ भी ज्यादा. So one next we have, next work is what, फॉर्मूले को अच्छी तरह से ध्यान में रखने का. फॉर्मूले में क्या है, लाप्लास f of f dash of t के f of 0 and लाप्लास f of t, तो f of t हो गया, f of 0 अभी. Now we have to calculate f of 0. So by data f of 0 is equal to 1. अब ये बोलोगे कहाँ से आया. So f of 0 you have to see this is f of t is equal to t plus and f of t is equal to 3. तो फंक्शन में वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ पे तो है नहीं आपके पास, और 0 यहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट क्लियरली क्या है, 2 से ऊपर तक, 2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0 to 2 तक, मतलब इधर तुम 0 रख सकते हो. So that's why we have to write f of 0 here. So according to that, or according to this concept, I have to write that is because f of t is equal to t plus 1, t plus 1. By data f of 0 is equal to 1 because f of t, तो यहाँ पे 0 रख दोगे तो you will getting 1. अब फॉर्मूला क्या है, लाप्लास f dash of t, which is equal to, formula was there, f of 0 or it is a sign of minus f of 0 plus s into Laplace f dash of t, oh, sorry, Laplace f of t. सिर्फ वैल्यू रखना है, f of 0 is what, 1, so this is minus 1 plus s as it is, Laplace f of t आपने निकाला ही है तो इसको ऐसा रख दो, 1 by s plus 1 by s square 1 minus e raised to minus s and multiply with s. So you will getting what, minus 1 plus 1, क्योंकि s से मल्टीप्लाई करोगे s get cancel, this square get cancel, so you will getting plus 1 by s
1 minus e raised to minus 2s. So this is Laplace of f dash of t is equal to minus 1 plus 1 by s into 1 minus e raised to minus 2s. So hope things are clear for f dash of t. Now we have to similarly calculate here Laplace of f double dash of t. f double dash of t का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए. The formula was clearly mentioned above, that is s square into Laplace f of t plus minus s into f of 0 minus f dash of 0. So we have to just put the values of we aware about, that is a Laplace transform of f of t is this value. F of 0 we have, and f dash of 0 is by default 0, because while taking the derivative of this part, definitely you will getting that is a 0. So we have to just put the value here, nothing more and nothing less. So just putting the value, and sorry 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, बिकॉज इसका हम डेरिवेटिव अगर ले लें एक डायरेक्ट डेरिवेटिव f dash of t which is 1 आ जाएगा. दिस पार्ट becomes 0 and derivative of t will becomes 1. अब इसमें अगर 0 रख दें, t equal to 0 आप रख दोगे अगर, so you will getting what f dash of 0 is equal to 1. So that's why it is a 1. So Laplace of f double dash of t which is equal to s square, f of t आपने कैलकुलेट किया है 1 by s प्लस 1 by s स्क्वायर. इधर 1 1 कैंसिल हो जाना चाहिए था, मैंने नहीं किया वो पार्ट. s स्क्वायर 1 माइनस e रेज टू माइनस 2s, ये पार्ट हो गया आपका. माइनस s इंटू एफ ऑफ 0 इज 1 माइनस एफ डैश 0 इज 1, सो 1. ये पार्ट हम लोग कैंसिल करके यहाँ पे एक्चुअली फाइनल रिजल्ट ये आएगा एफ डैश ऑफ टी which is equal to 1 by s 1 minus e raised to minus 2s. So this will become our part. Further we have to simplify this part, Laplace f double dash of t which is equal to, we have to simplify this part by, so this you will getting s plus s square get cancel, or you will getting 1 minus e raised to minus 2s minus s minus 1. अभी ये पार्ट और ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाता है. ब्रैकेट अगर ओपन करते हो तो ये 1, सॉरी ये 1 और ये 1 भी आपका कैंसलेशन में चले जाता है. एंड एट द एंड यू विल गेटिंग ओनली लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी which is equal to minus of minus e raised to minus 2s, and this is our final result. So just see, this is this all the things we perform according to the basic definition. Just check about the doubts if you, so just let me know. Very small topic, बहुत ही छोटा और बहुत सिंपल टॉपिक. सर बोलो बोलो. सर यहाँ पे एफ डबल डैश टी पे हम लोग ने एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कैंसिल किया. हाँ, उसके बाद अपने पास 1s + 1 भी तो था, वो कहाँ पे गया? क्या था?
1s+1 है ना, s स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1s+1। 1s+1, ये तो हाँ एस स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एस बचेगा खाली, ओके। तो वो एस इधर आ गया। और इधर जब एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर वन से अच्छा अंदर ओके। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 × 1 1 हो जाएगा, और 1 इंटू हाँ -e⁻²s वही रहेगा एज इट इज। ओके। हाँ और -s × f(0), क्या था, 1 था, तो -s ही रहेगा हम्म वो, हम्म बराबर। f'(0) क्या है, हम्म 1, तो वो 1 ही रहेगा एज इट इज। अब अगर पूरा दूं मैं तो जो कैंसिल हो रहे हैं देखो, 1 -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, s हाँ। और ये s कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ माइनस ऑफ e⁻²s। -2s। हम्म 1 last numerical for today's. I'm just taking सेकेंड प्रॉब्लम। ऑलरेडी हमने सॉल्व किया इस टाइप का प्रॉब्लम। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d/dt 1 माइनस cos of 2t अपॉन t। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल। और 1 माइनस cos 2t अपॉन t, यहाँ पे आपके लिए फंक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट फंक्शन यू आर नॉट सपोज टू परफॉर्म। सो फंक्शन से हम लोग शुरुआत करते हैं, और डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ऑलरेडी हमने इस टाइप का न्यूमेरिकल देखा है कल, डिवीजन बाय टी है। सो लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 2t which is equal to Laplace of 1 minus 1 का Laplace 1 by s from first lecture minus Laplace of cos 2t is s upon s square plus 4, s upon s square plus 4. So this is our Laplace transform. Now we have to apply Laplace transform of division rule, जो कल ही हमने देखा था, 1 minus cos of 2t upon t। जैसे डिवीजन में t आता है, इंटीग्रल s to infinity, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कैलकुलेट किया है, क्या है अपने पास, 1 बाय एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एस। सो वी हैव टू अप्लाई द लाप्लास इंटीग्रेशन रूल। तो देखो s का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर प्रेजेंट है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s होना चाहिए, वो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। सो वी हैव टू परफॉर्म समथिंग। So moving ahead with this part, s to infinity 1 by s into ds minus 1 by 2 into 2s upon s square plus 4 into ds। ये पार्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। अब पे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। सो डायरेक्टली क्या होगा, log ऑफ s, log s का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by s, तो 1 by s का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log s माइनस 1 by 2 ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में डायरेक्टली प्रेजेंट है, सो वी कैन राइट दैट इज log ऑफ f of x, लिमिट पॉइंट एज इट इज s to infinity।
मैंने आपको पहले ही बताया लॉग में अगर इन्फिनिटी दिख रहा है अपर लिमिट तो वो सीधा जीरो है। लिखना है तो लिख दो लॉग इन्फिनिटी माइनस लॉग ऑफ इन्फिनिटी, हाफ लग रहा है तो लगा दो इधर, यहाँ पे तो पूरा जीरो ही जाने वाला है। लोअर लिमिट का माइनस साइन ले लो, एस रखोगे तो लॉग ऑफ एस माइनस हाफ इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4. So according to this part will become 0, minus into minus plus. So 1 by 2 log of s square plus 4 minus s minus log of s. ये हम लोग को क्या मिल रहा है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट रिस्पेक्टिव फंक्शन। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। लॉग में मैंने आपको सिखाया ये चीज हमेशा अच्छी तरह से कि जो भी मल्टीप्लाई तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग ऑफ रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग ऑफ एस। माइनस रहता है तो लॉग डिवाइड में होता है, लॉग ऑफ रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस। ये पार्ट हमको मिल जाता है। किसका लाप्लास है? लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2t अपॉन टी। इसका लाप्लास हमारे को मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द फंक्शन। सो फंक्शन हमारे पास क्या है अच्छी तरह से आपको देखना है यहाँ पे। एफ ऑफ टी, f of t is given, that is 1 minus cos of 2t upon t। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो रख दूं then it will becomes 0 upon 0 because cos 0 is 1, so 1 minus 1 becomes 0, 0 upon 0. So at the end I can say directly this part is f of 0 is my 0। f of 0 मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है? 0 मिल जाता है। Now Laplace transform of इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म d by dt into 1 minus t upon t is equal to d by dt। हमारा क्वेश्चन था, फॉर्मूला अगर एक बार लिखना है तो लिख सकते हो वहाँ पे लाप्लास ऑफ f डैश ऑफ t which is equal to s into लाप्लास ऑफ f of t minus f of 0 minus f of 0। So we have to just write the लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो s इंटू लाप्लास f ऑफ t आपने निकाला है यहाँ पे क्या? log s इंटू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस। ये पार्ट हो गया माइनस एफ ऑफ 0, तो वो तो 0 लिखना है तो लिखो या फिर यहाँ पे रिजल्ट स्टॉप करो। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम। Now just sharing the attendance link, so please सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, मतलब ऊपर का हाँ लिखना कर है रहा हूँ मेरे कर को। रहा हूँ। ठीक है बस, या और ऊपर जाऊँ?
सर डन, थैंक यू। हेलो, यस निमित, थैंक यू सर। हाँ हो गया ना, तो अटेंडेंस फिल कर दो और लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू।